So here again I am with one more episode of Tazz Talks. So आज जो है Tazz Talks with whom? So बगैर कोई डिले किए हम आज अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो आज गेस्ट हैं टैज टॉक्स में, जो हमारे साथ आपके लिए गाइडेंस सेशंस और जो हमने प्रॉमिस किया है कि जिसमें हम इंडस्ट्रियल जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कॉल करेंगे, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स उनसे लेंगे, आपके लिए गाइडेंस के लिए जितना भी पॉसिबल होगा इंशाल्लाह ताला वी विल ट्राई और लेवल बेस्ट। तो आज जो हमारे साथ हैं वो है हमारे गेस्ट मिस्टर उस्मान हाशिम राव। और आई एम वेरी लकी इन दिस के उस्मान हाशिम राव जो हैं वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, और आई एम फीलिंग माई सेल्फ सो प्राउड कि मैं उनकी जो है टीचर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच उस्मान फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर आवर व्यूअर्स और स्टूडेंट्स एंड योर यूट्यूब फैमिली। तो थोड़ा सा उस्मान का अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उस्मान की टीचर भी रही हूँ, और माशाल्लाह ही इज़ वन ऑफ द जेम, यानी कि कह लें आपके क्रीम स्टूडेंट्स में से एक मेरे जो हैं उस्मान रहे हैं। और उस्मान जो हैं वो माशाल्लाह थ्रू आउट अपने कैरियर में, अपने स्टडीज़ में स्कॉलरशिप पे पढ़े हैं। ही इज़ माशाल्लाह जुल्फ़िकार गोल्ड मेडलिस्ट, और प्लस ये कि हर सेमेस्टर में ये जो हैं एफसी अचीवमेंट अवार्ड मतलब माशाल्लाह विन करते रहे हैं, और वीसी लिस्ट में भी रहे हैं। अभी करंटली उस्मान का अगर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूं कि मतलब इनकी सलाहियतों का, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला से बहुत दुआ है अल्लाह ताला इनको नजरे बद से बचाए, और अपने पेरेंट्स का जिस तरह से ये हमेशा से फ़ख्र रहे हैं, और आगे भी अल्लाह ताला इनको जो है वो अपने पेरेंट्स का जो है ना फ़ख्र बनने की और रहने की जो है वो हिम्मत और ताकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। उस्मान जो है वो सीनियर प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं, वन ऑफ द लीडिंग टेलीकॉम ऑपरेटर्स इन टेलिया एएस। एंड वो जो हैं इस वक्त करंटली आईओटी बेस्ड सर्विसेज पे काम कर रहे हैं। और बाकी ये कि ओवर टू यू उस्मान, लाइक अब आप अपने आप के बारे में बताएं हमारे यूट्यूब व्यूअर्स को, हमारे यूट्यूब फैमिली को, हमारे बाकी स्टूडेंट्स को, उन सब को जो कि आपसे पूछना चाहते हैं, बिकॉज आपके सेशन से शुरू होने से पहले ये एक लंबी चौड़ी जो है ना मेरे पास लिस्ट है क्वेश्चंस की। तो ओवर टू यू उस्मान। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all the YouTube family, first of all. And Rabbi Shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. So first of all, ma'am, I am feeling myself very honored and overwhelmed for all the good things that you have said for me. One thing I would like to add in here that ma'am Tazzaina has taught us over 4 courses in bachelor degree. So whatsoever we are today, there's a huge impact of ma'am Tazzaina's teaching and education that she has given us during the 4 years. And yeah, I'll be starting about myself. My name is Osman Hashim. I graduated from Rifa International University in November 2015. Almost 6 years ago, I got my first internship waiting as a web application development when I started my semester 4 and was waiting for the semester 5 to start. So basically during the summer holidays. I learned about the basic understanding of RESTful and SOAP APIs and how we use them. And believe me, I was thinking that now I knew entire web development, like I can do anything, but that wasn't the case. However, I discontinued my internship when my semester 5 started because I was really, really very precise with my studies, and my parents were very strict and they do not want me to do any job while I was studying. During these 4 years, my teacher, first of all, my parents have been my best friend, my teachers have been my best friend, and if after teachers, someone is my best friend, are my course notes, my books, YouTube, because you get to see a lot of tutorials on YouTube to learn about different technologies, Google, full stack develop, like so Stack Overflow, because Stack Overflow, you can find any code over there, and multiple blogging sites where you can read about different technology. That's my little story. After I graduated, I like right after I was in 7th semester when I got job as an Android developer in one of the companies. I worked with them for like 4 years. For like 7 months, and then I switched to another company. And during 4 years after my bachelor's, I switched like 5 jobs.
When I was in Pakistan, I was primarily working with. Primarily working as a developer, and I work with Android Studio, like Android development. I work with Java, on like Spring MVP, MVC. I also worked with PHP, Laravel, and yeah, I also worked with Angular JS at point in time. I was very good with React JS and React Native. When it comes to databases, I work with both SQL and non-SQL databases when I was in Pakistan. But since I'm in here, I've been worked on many other databases as well. So that's my little journey since I graduated from RIFA. Mashallah. Is it a little, Usman? It's a long journey and माशाल्लाह इस जर्नी में लाइक आपकी अचीवमेंट्स के ऊपर तो जिसे कहते हैं ना उस्मान किताब लिखी जा सकती है वंडरफुल ओके Mhm. उस्मान व्हाट इफ आई आस्क यू कि आप इस वक्त करंटली कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं हमारे यूट्यूब फैमिली को थोड़ा सा बताएंगे आप अपने बारे में कि अभी आप कहाँ पे हैं So I have a very beautiful answer to that. Right now, I'm about or approximately 5,000 kilometers away from Pakistan, in a country that is well known as the land of midnight sun, home to the beautiful feuds and the happiest nation around the globe. Yes, I'm referring to the Kingdom of Norway. And right now, I'm located in the capital, that is Oslo. राइट ओके सो व्हाट डू यू फील उस्मान के नॉर्वे में और पाकिस्तान में आपको क्या फर्क फील हुआ या मैम सबसे पहला और बड़ा फर्क ये है द क्लाइमेट क्लाइमेट right now it's yeah right now we have -8 degrees and it's snowing outside. And back in Pakistan, it wasn't that cold. And for like 8 months, it's cold in here. And in Pakistan, we have 8 months summer or something like that. Yeah. So that's a राइट basic difference. And then, but well, it's like this is the very general thing that I told you. But when you will be specific, like in a working culture, a lot difference, like hell lot of difference. If you talk about human relations, completely different. I think it was a cultural shock when I was in here, because I was from a different culture, different skin color. I had a different upbringing and a lot of things. And when I get in here, I get to meet people, and I find people really weird at times. But that's very normal. Even if you go to the US, even like we are very outspoken people, but if you go to the US, they are even much more outspoken than us. Or like, but when you come to Scandinavia specifically, no matter if you are in Norway, Iceland, Denmark, or Sweden, or wherever, like the people are very different. राइट ओके उस्मान व्हाट इफ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उस्मान आपने बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों ऑप्ट किया लाइक इसलिए ऑप्ट किया कि एक सब लोग कर रहे हैं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं बीएस कंप्यूटिंग कर रहे हैं तो मुझे भी जो है ना मैं भी कहीं पीछे ना रह जाऊं और मैं जो है ना बीएस सब जैसे एक फ्लो में चल रहे होते हैं उस्मान ने भी ये सोचा कि मैं मुझे भी ये करना चाहिए तो क्या ये था या पहले से आपने जैसे कहते हैं वो एक पेट होता है कि बचपन से मुझे शौक था कि मैंने ये काम करना है तो क्या उस्मान इस तरह की कोई चीज है या इसके पीछे कोई कोई मोटिवेशन है या किसी की गाइडेंस है ये बताएंगे हमारे ऑडियंस को I want to be very honest with this interview. So, okay, to be honest, I had no idea what software engineering was when I applied. Yeah, I know it sounds really weird. Actually, I always wanted to join Pakistan Army, but I faced very strong opposition from my parents. So out of anger, I just applied to RIFA. And the reason why I applied to RIFA is because my father was against it. He did not want me to apply in RIFA. Rather, he wanted me to apply in NUST, AIR, CompSats, or even UET. But just in anger, I applied in here. I got admission, and when I got admission, all of a sudden my parents were all like too much happy, and they didn't show any displeasure or anything. They supported me, and basically they were happy that I'm not joining Pakistan Army. But the thing is, when I got admission, I went online and I started reading about what software engineering is. I've ultimately accepted to this program, what I'm going to do, what I will be doing. So the first thing that I learned about that I will be able to design and make games.
Because when we are kids, we used to play a lot of computer games. Computer for me, when I was a kid, computer for me is a gaming machine. Okay, so we are playing EA games, FIFA. We are playing strategy game like Red Alert or things like that. So when I went online, I was like, okay, if I become a software engineer, after 4 years, I will be able to design another Red Alert or another FIFA. So this thing really gave me a kind of motivation that I will be like, I will have a skill to create thing that kids gonna love. So that was my first kind of motivation toward the field. Right. You have elaborated your motivation in a very good way. और मेरे पास जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, हमारे एक स्टूडेंट है इब्रार, उनकी तरफ से उन्होंने अपना Mm-hmm. सेमेस्टर मेंशन नहीं किया, बट उन्होंने यही Mm-hmm. क्वेश्चन किया था कि सर से पूछें कि उनके जो मोटिवेशन क्या थी बैचलर डिग्री करने के पीछे, कि मुझे तो जो है Mm-hmm. ना जबरदस्ती भेजा गया। ओके, ओके, आपने बड़ा अच्छा उसका आंसर कर दिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन मान मेरे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि आप ये बताएं कि आप क्या कोई टिप्स शेयर करना चाहेंगे बैचलर स्टूडेंट्स के लिए कि वो कैसे जो है वो इस डिग्री के दौरान मोटिवेटेड रहें, फोकस्ड रहें, रेलेवेंट रहें। उसकी पता है क्या वजह है उस्मान, अगर मैं थोड़ा सा ऐड करूं, बीइंग अ टीचर, होता क्या है कि ये जो सेमेस्टर सिस्टम है ना, इसमें स्टूडेंट्स आए होते हैं एनुअल सिस्टम से, एंड Mm-hmm. यू कैन रिलेट कि एनुअल सिस्टम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है। उसके चैलेंजेस समझते समझते ही बच्चों को जो है ना वो 3-4 सेमेस्टर गुजर जाते हैं। तो अभी हमारे पास जो है वो न्यू बीज भी अटेंड कर रहे हैं सेशन को, हमारे पास सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे पास हर लेवल का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है वो इस वक्त हमें सुन रहा है, और इवन वो भी सुन रहे हैं जिन्होंने अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी है एंड दे आर गोइंग थ्रू फ्रॉम एन एनुअल सिस्टम। तो आप कैसे उनको जो है ना वो गाइड करेंगे कि क्या है आपका सेमेस्टर सिस्टम, उस सेमेस्टर सिस्टम में आप किस तरह फोकस्ड रहें, किस तरह मोटिवेटेड रहें? क्योंकि मुझे बीइंग अ टीचर, इस तरह माँ को अपने बच्चे का पता होता है ना, इस तरह टीचर को अपने स्टूडेंट का पता होता है कि आप एक सेकंड जाया नहीं करते थे, आप बड़े फोकस्ड और बड़े कंसिस्टेंट एंड कमिटेड होते थे। तो आप थोड़ा सा, क्योंकि वही बात है कि वो जिसे कहते हैं ना, टीचर की बात जो है ना वो यूं करके गुजरती है और जो पीयर की बात है ना वो डायरेक्ट गुजरती है। तो आप किस तरह इसको जो है ना वो अपने नए स्टूडेंट्स को जो है ना वो टिप्स या ट्रिक्स या मोटिवेट करेंगे? Okay, ma'am, the thing is, there's some echo in the voice. Okay, anyway, ma'am, the thing is, when I started, well, when I get into this semester system, I like semester system more than the annual system, right? Because in semester system, you make your sessional with every week. So you learn, like one day you come into the class and you give a lecture. I'm listening to it very focusedly and I'm trying to understand. I come to you after the class and I said, मैडम मुझे बताएं, ये आपने ये चीज मुझे समझ नहीं आई, एंड सब समझ रहा हूँ एंड एवरीथिंग, एंड उसी वीक में एक उसका टेस्ट हो जाना है, सही है, एक क्विज हो जाना है, और वो क्विज जो है वो बेसिकली काउंट होना है फाइनल उसके अंदर। तो अब ये था कि मेरे अंदर जो सबसे अच्छी चीज हुई, मेरे ऊपर एक स्ट्रेस ये आ गया कि यार अगर मैंने ये चीज आज ना समझी ना, क्योंकि एनुअल सिस्टम में बच्चे क्या करते हैं कि वो पूरा साल नहीं पढ़ते, वो आखिरी 3 महीने लगाते हैं सही दम जम के, और जी वो बस बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। लेकिन मेरे लिए वो भी बड़ा मुश्किल था व्हेन आई वाज इन एनुअल सिस्टम कि भाई मैं एंड पे जाके सारा कर लूं। मैं हमेशा से थोड़ा थोड़ा साथ साथ करने वाला इंसान था। तो मेरा लिए ये था कि यार आज जो मैडम ने पढ़ाया है ना, अगर ये मुझे आज नहीं समझ आया ना उस्मान, ये तुम्हें कभी भी समझ नहीं आएगा। सो मेरे अंदर बस ये चीज थी, और आपने यही देखा होगा कि मैं अगर मुझे क्लास में समझ जब तक नहीं आती थी, आई केप्ट ऑन आस्किंग क्वेश्चन। आप मेरे किसी भी टीचर से जाके पूछ लो, आई केप्ट ऑन आस्किंग क्वेश्चन। दिस इज द ओनली थिंग। में वो स्टूडेंट जो क्लास में जाके बैठ जाते हैं एंड देयर लाइक, अच्छा बैठे में यार समझ नहीं आ रहा, टीचर पढ़ा तो रहा है बट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही इज टेलिंग मी। सो स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। नहीं समझ आ रहा ना, वो अगर टीचर ने डॉट भी लगा दिया ना, को सर मैडम ये डॉट वो दूसरे डॉट से इतना दूर क्यों है, start interacting with your teacher, start asking question. When you start asking question, आपका टीचर ऑटोमेटिकली आपके लेवल पे आपके ग्रैब करेगा आपको कि ये बच्चा कहाँ पे फंसा हुआ है, और वहां से आपको हेल्प होगी।
मेरे साथ हमेशा ये होता था, मैं अक्सर क्लास में बैठा होता था, तो मैं अक्सर ऐसे क्वेश्चन कर रहा होता था कि मेरे पीयर ये समझते थे कि ये उस्मान ऐसे क्वेश्चन इस वजह से कर रहा है कि ये क्लास का टाइम वेस्ट करे, और बच्चों को ये चीज समझ आई, तो बड़े प्रिलिमिनरी से क्वेश्चन है व्हाट ही इज आस्किंग. But to be very honest, from my side, those were very genuine questions. I was literally not understanding. So I was asking those questions again and again until I really grasped the concept what the teacher is trying to deliver. And I did not stop over there. So, okay, teacher explained something in the class. I followed, like I walked with teacher. If he or she is going to the next class, I walked with them and kept asking my things, kept asking me things. If teacher is going to the class, I'm just following them, asking questions while we are walking. When we are in the office, I waste my teachers 10-20 minutes in the office. I won't leave my teacher unless I understand. Just go and ask Dr. Rizwan bin Faz. मैंने सर को बहुत तंग किया. I irritated him a lot. But I think मेरी डिग्री में अगर कुछ अगर आज मुझे कुछ भी थोड़ा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पता है, तो मैं कुछ टीचर्स को मैं कहता हूँ कि अगर वो मुझे मिल जाए तो आई गोना पुट सम क्राउन ऑन देयर हेड्स. डॉक्टर इज़वान बिन फैज इज वन ऑफ देम, तज़ाइना इज वन ऑफ देम, सर रिज़ार इज वन ऑफ देम, सर मोहसिन अंसारी, आई डू नॉट वांट टू फॉरगेट हिज नेम, ही इज वन ऑफ देम. या सो दैट्स द थिंग. सो आप साथ साथ आपका जो लेक्चर हुआ है, आप बस ये कि अगर ये मुझे आज समझ नहीं आया, ये मुझे सारी जिंदगी समझ नहीं आएगा. दैट्स इट. मेरी ये स्ट्रेटेजी थी. वंडरफुल. और ये तो मैं कहती हूँ आपकी इस बात से मुझे जिसे कहते हैं ना 6 साल पुरानी मुझे जो है मेरी यादें ताज़ा हो गई हैं कि मैं अपने व्यूअर्स को अगर बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि उस्मान जरा अपने कान बंद करें, आपकी तारीफें आपको जो है ना आपको ना सुनाई. आई कैन टेक इट ऑफ. मतलब मैं अगर आपको व्यूवर्स चुपके से बताऊं, ये वो स्टूडेंट होते थे कि मैं अपनी बीइंग अ टीचर बात करूं, क्योंकि मेरा कहने के एज अ फ्रेश टीचर या जो मेरे कैरियर का स्टार्ट हुआ था वो उस्मान के मतलब कह लें कि बैच के साथ हुआ था. और जब मैं लेक्चर प्रिपेयर कर रही होती थी तो मेरे दिमाग में ना उस्मान का एक होता था कि ने ये भी बात पूछनी है, उस्मान ने ये बात भी पूछनी है, तो वो मैं कहती हूँ कि मैंने जितना लर्न किया ना वो शायद उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है ना वो उस्मान को भी जाता है. और उस्मान, कहीं हमारे व्यूवर्स ये ना समझ रहे हो कि कहीं ये जो है ना इन्होंने ना कोई पैसे वैसे लेके आपस में कोई सेटिंग की हुई है जो एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं. लिटरली ऐसी कोई बात नहीं है व्यूवर्स. ये सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि ये जो उस्मान ने बात की है ना कि अपना एक सेकंड जाया ना करें प्लीज. सेमेस्टर सिस्टम में आई विल सेकंड इट, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रही हूँ और मैं भी अभी टीचर भी हूँ. तो वाकई सेमेस्टर सिस्टम में आप एक सेकंड नहीं वेस्ट कर सकते. और इसकी मैं कहती हूँ उस्मान इज अ सक्सेस स्टोरी. हमारी जो स्टूडेंट्स बरादरी जिसे कहना चाहिए उसके लिए उस्मान इज वन ऑफ द रोल मॉडल स्टूडेंट, के एक स्टूडेंट को किस तरह से, और आपके सामने व्यूअर्स माशाल्लाह कि कितने अच्छी पोजीशन पे और कितना अच्छा जो है वो अर्न कर रहे हैं, साथ साथ लर्न कर रहे हैं. और उस्मान अभी भी स्टिल अपनी जो है वो एक शनाख्त बरकरार रखे हुए हैं. और उस्मान, मुझे याद है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो आपसे घबराते भी होते थे कि आपने जो है ना वो क्लास का टाइम जो है ना आप बहुत प्रोलॉन्ग कर देते होते थे. तो अल्लाह मेरे ताला से मेरे मेरे से कुछ टीचर्स भी घबराते होते थे कि मुझे, आई डोंट वांट टू नेम एनी टीचर, बट आई केम टू नो कि एक टीचर थे, उन्होंने वो कोर्स छोड़ के किसी दूसरे टीचर को दे दिया था क्योंकि इस क्लास में उस्मान है एंड ही आस्क्ड टू मेनी क्वेश्चन. चले सही हो गया, चले उस्मान, वो तो चले उसको तो क्या कह सकते हैं उसमें. आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास. अच्छा, एक और क्वेश्चन के जी सर से ये पूछे मैम कि आपका जो है इन मार्केट कैसा रहा एक्सपीरियंस एज एन आईटी प्रोफेशनल. मैम, दो तरह का एक्सपीरियंस है. वन इज व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान. सो व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, आई डू नॉट से इट वाज वेरी गुड, आई वोंट से इट वाज वेरी बैड. सो बट इट वाज वेरी बैड. I'm so sorry, but my experience in Pakistan wasn't very good. Because पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो है कि एक तो आप ये कहते हैं कि एक नया ग्रेजुएट आ रहा है तो आप ये कंसीडर करने लग जाते हैं कि he is a slave. So he's not a slave. So you consider that, okay, he is coming at 9 o'clock in the morning, and you think that he's gonna work until 11 or 12. Okay, and when after 12 we go back home, and if somehow at 1 o'clock some microservices are not running, your project manager is calling you, okay, you have to fix it. And I was like, dude, I just came back home an hour ago, right? So I'm not going to work on that. But ultimately we have to work because
out there in Denmark or in the US, the services are down. So एक तो ये चीज, और दूसरा ये है कि मैं आपको मैम, जैसे आपने शुरू में बताया कि आपने मेरे बारे में बताया कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट एंड एवरीथिंग, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत ज़्यादा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत दी। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, मुझ पे प्राउड फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा गोल्ड मेडल होना मेरे लिए एक सजा बन गया पाकिस्तान के अंदर, व्हेन आई वाज वर्किंग विद डिफरेंट कंपनीज। तो जब मैं, यानी कि जाहिर सी बात है, यू आर नॉट परफेक्ट, मैं भी कभी गलती कर सकता हूँ, मेरे से भी कभी गलती हो जाती है। तो मुझे एक तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर्स वहां पे बुली किया करते थे, अच्छा ये, एंड दे यूज्ड टू से दिस थिंग जो मुझे बहुत हर्ट करती थी, गोल्ड मेडल लेने से कुछ नहीं होता। एंड आई वाज लाइक सीरियसली। तो एक वक्त होता है कि आप शुरू में थोड़ा टॉलरेट करते रहते हो, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा ना यानी कि आंसर देना पड़ता है। तो आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द कंपनी, and I'm telling you a genuine story. So I was working with one of the company, and they were working on one of the projects, and the design a sprint, and they were basically working in agile scrum, and they were they they ended a sprint after 6 months. Can you even believe that? Like, how come in Agile you are closing a sprint after 6 months? There are no retrospective, there are no orders, nothing. What the hell? And then after 6 months, there were some issues in the microservices, and the person just came to me and he said, "Oh, it's because of you." And that day, I just lost my temper and I said, "First of all, you tell me, where are your skills? How come a 2 months, like a 2 week sprint longed up to 6 months?" So these are a few of the things. So this is one thing. So I'm so sorry if I'm like prolonging it a lot. But in other companies, I have a very good experience as well, very cooperative people. But when I came in Norway, my experience and working was completely revolutionized, to be very honest. यहाँ पे you are like, हम parallel system लेते हैं. Like for example, if let's suppose I'm a developer and there's a product manager or a product owner, there's no difference between us. We are same. ओके, देयर इज नो डिफरेंस। अगर हम यहाँ पे मीटिंग कर रहे हो, यहाँ पे कंपनी का बॉस बैठा हुआ है और वो कोई बात कह रहा है जो कि इट डजंट मेक सेंस, तो हम बहुत तरीके से उसे बता सकते हैं कि यू आर टेलिंग समथिंग रॉन्ग व्हिच वी कैन नॉट डू इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे ये सीन है। और दूसरा यहाँ पे दूसरा ये है कि आपकी लाइक आपकी जो एक सोशल लाइफ है और वर्क लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो बहुत बैलेंस्ड है। लाइक मुझे पता है कि यार मुझे 8 o'clock इन द मॉर्निंग ऑफिस आना है और 3 o'clock में छुट्टी कर जाऊंगा और बीच में मुझे 30 मिनट्स की ब्रेक मिलेगी, सही है। और अगर इन केस में 3 बजे से ज्यादा काम करता हूँ तो मुझे ओवर टाइम देगी कंपनी, राइट। तो मुझे कभी ये मसला नहीं हुआ कि भाई, मुझे आज तक नॉर्वे में मैंने 2 डिफरेंट कंपनीज में काम किया और मुझे आज तक कभी ये मसला नहीं हुआ कि मेरे बॉस ने या मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर ने मुझे कॉल करके रात के 12 बजे कहा हो कि यार ये फलानी चीज बंद होगी तो जस्ट डू इट। So this is the thing. That's why I really like working in Norway or in Europe. राइट, वंडरफुल उस्मान। एंड अगर लाइक बिल्कुल एक ऑफ द टॉपिक एक क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आज से 6 साल पुराना जज्बाती उस्मान, क्योंकि आपको पता है वो एज ग्रुप एक ऐसा होता है, हर स्टूडेंट रिलेट कर सकता है अपने आप को कि जब आप बीएस की डिग्री में आते हैं, आप का जो है ना एक जज्बाती, जल्दी हाइपर हो जाना, गुस्से हो जाना है, और ये इस टीचर ने क्या पढ़ाया है, इसको तो जो है ना पढ़ाना ही नहीं आता, और ये तो ये है, वो तो वो है। उस वाले उस्मान में और जो माशाल्लाह अब इतना प्रोफेशनल, इतना मैच्योर, इतना डेवलप्ड उस्मान है, क्या फर्क देखते हैं? मैम मैं एक बहुत ह्यूज फर्क देखता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ह्यूज डिफरेंस। आई वाज सो इनोसेंट, I will say I was innocent, I was very innocent, I was very different. The way I looked at things when I was in my bachelor degree, it was like a kid. I looked at everything like a kid, but now I'm a little bit more practical. And during these last 6 years, my life in too many ways, in my personal, my professional, in too many ways, it has changed. राइट, गुड। ओके उस्मान, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हम Yeah. देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या आया। अच्छा उस्मान, एक क्वेश्चन आया कि सर से ये पूछें मैम कि आपने जो है मास्टर्स डिग्री जो है वो उसको करना है बीएस के बाद, क्या आपने उसका डिसीजन फौरन लिया? ठीक है,
प्लस ये कि अगर आपने फॉरेन लिया तो कितने अरसे बाद, मतलब कितना फॉरेन के यहाँ पे आपकी बीएस डिग्री खत्म हुई, आपने कोई जॉब किया, इंटर्नशिप की, या फॉरेन आपने मास्टर्स डिग्री के लिए आपने मूव किया? और अगर फॉर एग्जांपल आपने मास्टर्स का डिसीजन लिया भी है, तो आपने कौन सी जो है ना वो फील्ड चूज की अपने उसके लिए, मास्टर्स के लिए? Acha, so the thing is, I was very clear from the very first semester that I have to do PhD. And in order to do PhD, I have to do master. And I always wanted to do master from abroad. And one of the reasons why I wanted to do PhD is that because my brother was pursuing his PhD from Italy by then. And every time we were sitting at a breakfast table or lunch table or a dinner table, or even if some guests are visiting, everyone is talking about PhD. And I was like, PhD is something. And my brother always used to tell me it's very difficult, you can't do it, and blah, 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 blah. So one day I just asked him like what I have to do, and he told me that your concepts, skills, grades, CGPA at bachelor level should be very, very good. And just because I have this goal in my head that I have to do PhD, okay, and in order to achieve a PhD, I need to do a master, and master from an abroad university from somewhere outside Pakistan. I should have very good grades. This was the thing that was very stressing factor for me throughout 4 years. Why I came to all my teachers, because I do not want to lose a chance to move abroad to do my master degree, and in order to get master degree I want to have a good grades. And that's the reason my grades were very good. I was very concerned, very sincere to my education and everything. But at that interval in time, I did not know that, okay, मुझे क्या करना है, मुझे मास्टर किस चीज में करना है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में करना है, डेटा साइंसेस में करना है, डेटा बेसिस में करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना है, ओके, डिजाइन में करना है, किस में करना है. I had no idea. So right after my like मेरा हमेशा से था कि मैंने मास्टर तो करना है. ठीक है, जब मेरी डिग्री खत्म हुई तो मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हुआ. I was like, just get into the industry, learn how softwares are being built. I don't want to do a master degree and then come to the industry. I want to gain some experience, some insight into the market so that I can use that experience during my master degree. सो मैं मार्केट में गया और जो चीज मैंने सब, पाकिस्तान में ज्यादातर चीजें आउटसोर्स हो रही हैं, सही है, और मैंने भी ऐसे ही सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ काम किया जिनमें बहुत सारी चीजें आउटसोर्स हुई हैं. कोई डेनमार्क से आउटसोर्स हो रही है, कोई यूएस से हो रही है, कोई यूके से हो रही है, कोई ऑस्ट्रेलिया से हो रही है. तो जो चीज मैंने सबसे ज्यादा मिस की ना, और जो चीज हमने सबसे ज्यादा पढ़ी थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, दैट वाज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. Dr. Rizwan was telling us all the time, Madam Tazzaina was telling us all the time that all the software are failing because there was not proper software requirement engineering. And in the market, there is no documentation, there is no software requirement engineering, there is nothing. They have got no idea. They're following Scrum, and in Scrum, what is the standard? Okay, there will be a Scrum Master, there will be a product owner, they should have some certain level of certifications, and yes, now they are ready to lead the teams. But like, still you need, no matter what you are following agile or whatsoever, you still need to be very clear on the goal and the scope of the project, which I have missed a lot in Pakistan. Even in Norway, we like, however, they are very understanding, they give us a lot of opportunity to enforce the best practices and everything, but still we are struggling with it. So after working in Pakistan for 4 years, the only problem I had is that there was no software requirement specification document. Right, so I started looking online. अच्छा भाई, अब मैं कौन सी डिग्री करूं, like किस में जाऊं? तो फिर अब मैं देखें, when I was doing my bachelor, I was good in all the subjects, right? I was good in networks, I was good in programming, I was good in design. Like my concept was clear for everything. So मैं जिस भी फील्ड को देखता था ना, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता था. सही है, मैं नेटवर्क देखता था, मैं कहता था हाँ मैंने ओएस में ये किया, मुझे स्क्रिप्ट लिखने आते हैं, तो भाई मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा. ये मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि मुझे सब कुछ आता था, यानी कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सब कुछ आता है. जब मैं उसके बारे में पढ़ता था, मैं कहता था ये तो मैं यूं कर लूंगा, अच्छा ये रिसर्च कर लूंगा. लेकिन मुझे फाइंड आउट करना था कि मैं एंजॉय किस में करता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ.
ठीक है, करने को तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना है जो लाइफ टाइम मेरे साथ रहे और जिसमें एंजॉय करूँ करता हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि यार मुझे ना कोई ऐसी डिग्री करनी चाहिए जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, यूजर्स, क्लाइंट, मार्केट, ये सब लोग हों। तो मैंने खैर ये तो जब मैंने चूज किया, ये तो शॉर्ट लिस्टिंग में आ जाएगा, वो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगा। बिकॉज जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, मैंने over 100 universities में apply किया throughout globe. Within the US, I applied over 15 universities, including MIT, Harvard, and Pennsylvania University, and all the three सॉरी universities. इंटरप्ट कर रही हूँ आपको उस्मान, अगर Yeah, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो आपने एक्सप्लोर करनी शुरू की यूनिवर्सिटीज के, मैंने एमएस yeah, के man. लिए जो है अपनी रेलेवेंट फील्ड के लिए जो है मैंने इस यूनिवर्सिटी को या इस कंट्री को मैंने सिलेक्ट करना है, तो क्या वो बीइंग इन पाकिस्तान आपने हंटिंग शुरू की थी? क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए कि वो क्या करें, कि पहले किसी फॉरेन कंट्री में मूव करें, किसी अंकल आंटी के पास जाएं और उसके बाद जो है वो देखना शुरू करें, या आपने पाकिस्तान में रहते हुए अपनी रेलेवेंट डिग्री के लिए आपने कंट्रीज देखना शुरू की, आपने यूनिवर्सिटीज देखना शुरू की कि अपने मास्टर्स इसमें करना है, स्कॉलरशिप देखनी शुरू की? अच्छा मैम, सीन ये था कि मैंने इंटरनेट पे ही देखना शुरू किया और मैंने यूएस से स्टार्ट किया, बिकॉज हम सब यूएस की तरफ देखते हैं ना। आप गूगल के ऊपर जाकर देखें टॉप यूनिवर्सिटीज, 1000 टॉप लाइक 1000 टॉप यूनिवर्सिटीज तो आपको यूएस से मिल जाती हैं, राइट? तो मैंने सबसे पहले, मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, ना मैं यूके गया, ना मैं यूरोप गया, ना मैं ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया तो खैर मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहीं और नहीं किया। मैंने सिर्फ यूएस, मैंने गूगल के ऊपर जाकर लिखा कि भाई टॉप यूनिवर्सिटीज इन द यूएस, और वो बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी आ गई, हार्वर्ड आ गई, येल आ गई, शिकागो आ गई, ब्ला 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 यूनिवर्सिटीज आ गई। तो मैंने फिर ना उन्हें एक्सप्लोर करना शुरू किया कि अच्छा अगर मैं किस प्रोग्राम में जाऊं। और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के अंदर जो प्रोग्राम्स मुझे बहुत ज्यादा रेलिवेंट लगा वो लगा मास्टर इन कंप्यूटर साइंसेज, ठीक है। कहीं पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी था, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर था, इस तरह के भी थे। लेकिन कंप्यूटर साइंसेज में होता है कि आपका अम्ब्रेला बहुत, या आपकी जो स्पेक्ट्रम होता है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है, आप किसी भी तरह किसी भी फील्ड में जा सकते हो। यानी कि अगर मैं प्रोसेस में भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर, इस वजह से मैंने बहुत सी यूएस में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में मैंने कंप्यूटर साइंसेज ही सिलेक्ट किया। मैंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी सिलेक्ट किया, लेकिन मैंने ये चीज लर्न की विद द पैसेज ऑफ टाइम कि मुझे नेटवर्क के कॉन्सेप्ट सारे पता है, लेकिन मैं नेटवर्क को कभी भी इंजॉय नहीं करता। मुझे स्क्रिप्टिंग करनी है, मैं स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, लाइक मैं उसे इंजॉय नहीं करता। तो मैंने वो चीज ऐसी ड्रॉप कर दी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि फॉर एग्जांपल देखें, यूएस की जितनी भी यूएस की क्या, आप किसी भी कंट्री की यूनिवर्सिटी पे चले जाए ना, जो एक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होगा ना, ऑलमोस्ट वही हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होगा। सही है। अच्छा, मैंने सबसे पहले जी खोली हार्वर्ड, बिकॉज हार्वर्ड में तो बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं, वहां से मुझे स्ट्रेट रिजेक्शन मिली। तो तो मैंने हार्वर्ड खोली और उसके अंदर मैं देखना शुरू किया कि हाँ भाई इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि आपने जीआरई किया होना चाहिए, टॉफल या आइल्स होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए, या फिर मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, आपकी डिग्रीज के कुछ उन्होंने ग्रेड के क्राइटेरियाज लिखे हैं। फिर सेकेंडली उन्हीं की वेबसाइट के ऊपर वो बताते हैं कि कोर्स डिस्क्रिप्शन के बारे में बताते हैं। फिर आप वो कोर्स डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो और आप उसे मैच करते हो अपनी कोर्स डिस्क्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्ट के साथ, और फिर आप देखते हो कि यार क्या मैं लाइक एकेडमिकली या जो मेरी डिग्री है वो सेटिस्फाई करती है, प्री रेक्विजिट है इसका या नहीं है। सही है। तो या तो वो सारा कुछ किया। फिर यूएस के अंदर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ हर यूनिवर्सिटी का कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप होता है। लेकिन हर यूनिवर्सिटी आपको, अगर आपका अच्छा जीआरई हो, आपका अच्छा टॉफल या आइल्स हो, वो आपको एनीवे 25% स्कॉलरशिप दे देते हैं। बट 25% स्कॉलरशिप इज नथिंग, राइट। आपको आपकी जो 2 ईयर का आपका पूरा वो होगा, वो आई थिंक उस जमाने में जब मैंने चेक किया था तो $25,000 था, जो कि अच्छा खासा था तब भी और अब भी। खैर मुझे कभी भी फाइनेंस का इश्यू नहीं रहा, बिकॉज माय फादर टोल्ड मी वन थिंग, बेटा गो फॉर द बेस्ट यूनिवर्सिटी, यू जस्ट हैव टू डू पीएचडी. My father was very much into tech, so he wanted me to do PhD and everything, and he was very much pushing me to move to the US for master and everything. But I was like, यार ये मैं इतनी महंगी इस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, अच्छा सिर्फ $25,000 जो है वो तो सिर्फ यूनिवर्सिटी की फी निकल जाएगी, उसके बाद वहां पे मैंने रहना भी है, मेरी अकोमोडेशन होगी, मेरी ईटिंग होगी, मेरी ट्रैवलिंग होगी, अच्छा और भी बहुत सारे 600 खर्चे निकल आते हैं।
तो मैंने कहा कि नहीं यार, अब्बू जी दे तो देंगे लेकिन दैट्स नॉट नाइस, दैट्स नॉट गुड. सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि यार मैं कहीं स्कॉलरशिप अगर मिल जाए. तो फिर मुझे पता चला कि अगर आप जीआरई कर लेते हैं तो आप फुल ब्राइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो बेसिकली जो मेरा जो ज्यादा इंटरेस्ट जीआरई के लिए हुआ वो मैंने फुल ब्राइट के लिए ही जाना था और मैंने फुल ब्राइट के लिए ही जीआरई दिया. अच्छा, अब जीआरई का क्या था कि जीआरई एक बड़ा बहुत टेक्निकल और बहुत जिसे कहते हैं ना, उसमें आपको बहुत पढ़ना पड़ता है. और मैं आपको बताऊं कि मैंने तो भाई बहुत पढ़ा. मैं सच्ची बात बताता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैंने नहीं पढ़ा, मैंने बहुत मेहनत की. मैंने उसके लिए एक एकेडमी भी ज्वाइन की थी फॉर 3 मंथ्स जीआरई के लिए. और मैंने उसके अंदर बहुत चीजें लर्न की. और मैंने सिर्फ जीआरई करने के लिए 3000 वोकैबुलरी वर्ड्स लर्न किए थे बाय हार्ट, बाय मीनिंग एंड एवरीथिंग, जो इंग्लिश लैंग्वेज के. फिर मैंने जीआरई दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 329.5 आउट ऑफ 340. I got 161 in verbal, 164 in quantitative, and 4.5 in analytical writing. So in total, this was 329.5. So माशाल्लाह, yeah, thank माशाल्लाह, you. वंडरफुल, वंडरफुल. Yeah. So फिर जी जी उस्मान, प्लीज कंटिन्यू करें. हाँ, अब जीआरई करने का मैम मुझे सबसे अच्छा फायदा ये हुआ था कि मुझे आइल्स मुझे इंग्लिश का कभी भी प्रॉब्लम नहीं था. आई ऑलवेज बीन काइंड ऑफ familiar with English because my early schooling is from Beacon House and everything, so I was good with English, so I had no issue, nothing. So but जीआरई ने मुझे बेनिफिट दिया कि मुझे टेंशन ही नहीं थी आइल्स की. सो मैंने आइल्स बुक करवाया एंड आई डिड नॉट प्रिपेयर माई सेल्फ. और 2 दिन पहले मैं मार्केट गया हूँ और मैं जाके आइल्स 7 और आइल्स 12 की बुक ले आया हूँ. उसके अंदर 6 टेस्ट थे, वो मैंने रात को बैठ के किए हैं और आई वाज लाइक या आई एम रेडी टू गो. तो मैं आइल्स दिया एंड आई गॉट अल्हम्दुलिल्लाह 8.5 आउट ऑफ 9 इन देयर एज वेल. माशाल्लाह. उस्मान, आपके इससे मेरे दिमाग में आया कि डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स इस वक्त, मैंने आपको बताया ना, मल्टीपल लेवल के हैं, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के हैं, मल्टीपल सेमेस्टर्स के हैं. तो मेरे दिमाग में इस वक्त आ रहा है कि लाइक व्हाट डू यू से कि आपके साथ अगर आपके पास टाइम हो तो एक्सक्लूसिवली हमें क्या सेशन रख सकते हैं कि आप उन स्टूडेंट्स को गाइड करें कि जिन्होंने आइल्स करना है, जिन्होंने जीआरई प्रिपेयर करना है, जो कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए जो है ना हाथ पांव मार रहे हैं. तो क्या हम आपके साथ एक इसका पार्ट 2 कह लें अगर हम रखें, तो वुड यू बी अवेलेबल फॉर दैट सेशन? I will try my level best to get myself available, and inshallah, we can definitely discuss on that. No worries on that. But yeah, I think the question left in between. I was just started bragging about myself. I'm so sorry for that. Okay, so the thing is, like, if you are applying for a US university, you need for at master degree level, you need GRE, you need TOEFL or IELTS, you need letter of motivation, you need your degrees to be attested from AHEC, and you need to get like your transcript of university should be attested from HEC, and your intermediate degrees, certificates, and master degree, metric certificate should be attested from IBCC, inter board something, I don't know what it stands for. तो फिर उसके बाद आप फिर अपनी जो हैं वो अप्लाई करते हैं. तो मैंने ओवर 15 यूनिवर्सिटीज अप्लाई किया था, जिनमें से 4 की मुझे स्ट्रेट रिजेक्शन आई, जिसका मुझे बहुत दुख था. लेकिन जिसका मुझे बहुत ज़्यादा मुझे खुशी थी वो थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. उस वक्त जब मैंने अप्लाई किया था उस वक्त वो वर्ल्ड की 4th सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी थी. एंड तो यू वर अभी तो सिलेक्टेड फॉर दैट? या कंप्यूटर साइंसेस के अंदर मास्टर इन कंप्यूटर राइट, साइंसेस, वंडरफुल. लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिला था. स्कॉलरशिप नहीं मिला तो फिर आपको उन 15 में से चले 4 तो मतलब रिजेक्शन होगी, कोई बात नहीं, आपने उससे भी लर्न किया, ठीक है. एक तो पहली बात. दूसरी बात, आप ये बताएं कि जो पिछली जो बाकी रह गई आपकी यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, लाइक वो स्कॉलरशिप नहीं मिला, तो जो बाकी थी उनमें से आपने फिर शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह की कि मैंने अब जो है मैंने विद स्कॉलरशिप किस पे जाना है, किसको ऑप्ट करना है और किसके साथ अपना स्टडीज कंटिन्यू करनी है? मैम 25% स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी आपको दे देती है अगर आपका अच्छा आइल्स हो. आइल्स कह रहा हूँ, अगर आपका अच्छा जीआरई और गुड ग्रेड्स हो. वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज में मिल गया था. कुछ मैंने एमी फजूल यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर दिया था, तो उनमें मैं जाना नहीं चाहता था. अच्छा, लेकिन ये था कि मैं ना फुल ब्राइट के लिए जाना चाह रहा था. मेरे से एक छोटी सी गलती तो नहीं कहूँगा, हर चीज में अल्लाह ताला की बेहतरी होती. मेरे से डेडलाइन मिस हो गई. मेरे ओहो. से
मेरे से ना फुल ब्राइट की डेडलाइन मिस होगी, तो वरना मेरा लेटर भी आया हुआ था, मेरे लिए इजी था. बट एनीवे, तो इस वजह से फिर ये था कि डेडलाइन मिस होगी, और मीनवाइल मेरा पेरेंट्स का, हम लोग का प्लान बना कि हम लोग नॉर्वे आते हैं. तो हम, मैंने कहा चले ठीक है नॉर्वे चलते हैं. और जब मैं नॉर्वे आया और मैं यहाँ पे आके सारी यूनिवर्सिटीज मैंने विजिट की. आई विजिटेड Oslo, आई विजिटेड यूनिवर्सिटी ऑफ Oslo, आई विजिटेड Foss यूनिवर्सिटी, आई यूनिवर्सिटी NTNU Gjøvik campus, that's 200 kilometers away from Oslo. तो जब मैंने यहाँ पे facility in term of buildings, facility in term of faculty, facility in term of infrastructure, जब ये सब चीजें मैंने देखी, I was like, this is very good country. And the best thing about Norway was कि भाई यहाँ पे आपको, there is no tuition fee for international students, so you basically study free of cost, so you don't have to pay anything. The only thing is that Norway is very expensive. It is one of the most expensive country around the globe. So you have to bear your own expenses. And for that, you have to show a bank statement of like 25 like Pakistani rupees, which you have to send when you get like when you apply for university and you got an offer letter. Then you have to send that 25 lakh Pakistani rupees to university bank account in order to apply for the visa. All right, all right. So, how was your experience being a graduate student? Like, कैसा लगा परदेश में? मैं शुरू में तो बहुत exciting था. I was so excited and I was kind of very immature. I was going in tubes. I was I was traveling on trains and I'm going live on Facebook and telling people, look, I'm going to the toilets. I'm telling, look, this toilet is so beautiful. See in here. So I was so immature and starting, and basically I was super duper excited by then. But with the passage of time, I think I learned a lot and my focus was changed from being a kid to a professional, because I have to make myself in the market. And when you are sitting in a meeting room and when you have to lead a meeting, you have to, there's a huge responsibility on your shoulders that you have to make sure that you take care of each and every participant in the room. You have to make sure you don't insult anybody. You have to make sure that your words should be very balanced. Like you should have to be careful for your body language. So there are a lot of things which I learned. The best thing is that I got, like, I was sitting in Ushlomat, and in Ushlomat there was a garage, like a startup garage. So there was a lot of companies that were startup, those were working over there. So once there was like in here, every month there is some event going on. So in a meeting I met a girl who was working with similar. So I just explained my things to her, like what I'm looking for, what's the problem that I've faced in the industry. And I just talked to her and she said, would you like to work with us as a UX researcher, because we have a vacancy and you kind of very you kind of very appropriate guy for that. I thought, yeah, why not? I'm also looking for a job these days. So yeah, that's how I landed my first job in Norway. Right. Okay, Usman, I am watching a list of questions. Okay. हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैम सर से पूछें कि इतने सारे ऑप्शंस में से व्हाई यू ऑप्ट नॉर्वे. सेकेंडली कि आप सर से ये पूछें कि अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स डिग्री के लिए नॉर्वे को चूज़ करता है, कोई नॉर्वे की यूनिवर्सिटी को चूज़ करता है, तो मास्टर्स की डिग्री को अप्लाई करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स हैं, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अच्छा, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा. एक्चुअली मैंने नॉर्वे, सबसे पहले मैं आंसर कर दूं कि मैंने नॉर्वे इस वजह से सिलेक्ट किया कि एक तो मेरा भाई था यहाँ पे, माय ब्रदर वाज लिविंग इन हियर. सेकेंडली, एजुकेशन वाज फ्री. सेकेंडली, आई विजिटेड ऑल द यूनिवर्सिटी. आई मेट the program coordinators, teachers. I looked into the startup labs, like how people are working culture, how much they are concerned with mental health, how much, like I saw a lot of things. I saw saw their welfare systems. So these all are the things that forced me to drop idea to go to the US and come to Norway. So that's why I choose Norway. In order to come to, just give me 1 second. Okay, I have written down like what you have. There are three. It is a 3-step process in order to apply in Norway. First of all, you won't have to pay even a single penny even for applying.
So it's all free. Like you are just sitting, you just need your documents ready. Everything is online. You don't have to send your documents even. Like in a case of US, I have to send a lot of copies, attested, and blah blah blah. It's a lot of paperwork. But in case of Norway or in case of Sweden, in case of Germany, you won't have to even like do any paper. Like you don't have to do literally like hard copy work or something. You just have to scan your things and upload it on the on the application portal. And when the deadline arrives, they're going to tell you if you're selected or not. So what things that you need is a three-step process that I can explain in here. So you need to attest your matric certificate and intermediate certificate from IBCC, attest bachelor degree from HEC, and also attest bachelor transcript from HEC. You must have an IELTS certificate with overall band not less than 6.5 and no individual band less than 6.0. Now this requirement is even going up, and some universities or like, however, I tell you one thing, this whatsoever I'm telling you right now is according to IT industry. So in IT, the minimum standard is 6.5 overall band with no band less than 6.0. But for example, if you are going for English literature, you must have at least 7.5 overall, right? So, and in writing, you need 7, not less than that. So Right. it's like that. So, but what I'm telling right now is according to IT industry. Right. Okay, then you Okay. then you need a bank statement of 25 lakhs Pakistani rupees in your name, or if it's in your father's name, you need a sponsor letter declaring that your father is responsible for your living expense in Norway during your 2 year stay. मैं बहुत ज्यादा अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ, अगर आप कहती हैं तो मैं उर्दू में कर लेता हूँ. अगर आप उर्दू में कर लेंगे ना, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आ रही है, मगर हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं कि, और ऑनेस्टली सबकी इतनी इंग्लिश जो है वो पिकिंग इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो Okay. दैट वुड बी अ गुड थिंग आई गेस. चलें, सारे मैं कोशिश करता हूँ. एक्चुअली कुछ अरसे में मेरी उर्दू थोड़ी सी बुरी हो गई है, लेकिन आई विल ट्राई. लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं उर्दू ड्रामे देखता रहता हूँ ना, तो मेरी उर्दू अच्छी भी है. राइट. अच्छा. अच्छा, तो अच्छा. आप लोगों को, हाँ. जी, जी. तो मैं पहला स्टेप दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. अच्छा, आप लोगों ने ये करना है कि आपकी जो मैट्रिक की और एफएससी की जो भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपने आईबीसीसी बोर्ड जाना है और उनसे टेस्ट करवा लेनी है. उसके बाद जो आपकी बैचलर की डिग्री, आपको एक डिग्री कार्ड मिला था और एक ट्रांसक्रिप्ट है, उन दोनों को आपने एचईसी से जाके अटेस्ट करवा लेना. आजकल ऑनलाइन अटेस्टेशन होती है, तो आप एचईसी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से टाइम लेंगे और आपकी अटेस्टेशन हो जाएगी. अच्छा, आइल्स बहुत जरूरी है. बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं एवरी टाइम. आई एम लाइक आई आल्सो रनिंग a group on Facebook where we tell people that how to come to Norway to study and even doing job in here. So I will also share that with you guys after the meeting. Okay. So बहुत से लोग मेरे से आगे सिर्फ एक बात पूछ रहे होते हैं कि क्या नॉर्वे में हम किसी तरह बगैर आइल्स के मास्टर करने आ सकते हैं. अच्छा, और मैं उन्हें बताता हूँ कि नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. नॉर्वे के लिए तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं. एंड देन दे सेड, अच्छा हम स्वीडन जा सकते हैं. लाइक नहीं, स्वीडन के लिए भी नहीं पॉसिबल. नहीं, वो मेरे भाईजान जो थे, उन्होंने 10 साल पहले अप्लाई किया था और उन्होंने यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर लगा दिया था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, और वो तो हो गए थे. तो मैंने कहा वो उस जमाने में हो जाता था, लेकिन अब बहुत डिफिकल्ट हो गया. तो अभी अगर कोई एक आधी यूनिवर्सिटी, कोई, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है, कोई एक आधी शाजू नादू यूनिवर्सिटी होगी जो आपको अलाउ करती होगी कि आप कोई ऐसा सर्टिफिकेट जमा करवाएं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्रूफ दे कि आपकी इंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन जो था वो अंग्रेजी था, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे. लेकिन वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है जब आप वीजे के लिए अप्लाई करते हैं. जब आप वीजे के लिए अप्लाई करते हैं ना, देन एट दैट पॉइंट इन टाइम यू हैव टू गिव देम ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, अपनी ट्रांसक्रिप्ट, फाइल्स, जीआरई, एवरीथिंग. एंड देन इफ आइल्स इज मिसिंग और वीजा ऑफिसर या काउंसलर जो वो देख ले कि अच्छा आइल्स मिसिंग है, तो फिर वो आपसे कहेगा कि आप आइल्स जमा करवाएं. और तब अगर आपने आइल्स जमा ना करवाया, उसकी जगह वो लेटर जमा करवा रहे हैं, तो 90% चांसेस ये होते हैं कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा. तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ओ माय गॉड किसी तरह भाई हम बाहर निकल जाएं, तो वो डंकी लगा के आप आ सकते हैं. इस तरह नहीं आ सकते. आइल्स आपको देना पड़ेगा. राइट. और या राइट. ओके. अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ. स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर नॉर्वे वो चूज करते हैं फॉर देयर मतलब फर्दर डिग्री, तो क्या वहाँ पे बीइंग अ स्टूडेंट व्हाइल स्टडिंग पार्ट टाइम जॉब्स कंफर्टेबली मिल जाती हैं और क्या वो मैनेजेबल होती हैं?
ओके, सो अगर तो आप आईटी इंडस्ट्री से हैं और आपको वाकई कोडिंग बहुत अच्छी आती है, आपके पास कोई स्किल है जो वाकई आपको अच्छी वाली आती है, आप डिजाइनर हैं, आप डेवलपर हैं, आपको पीएचपी अगर बहुत अच्छी आती है, आपको आर आती है, ऐसी अगर लैंग्वेजेस आपको आती है ना, तो आपको जॉब जो मिल जाएगी। और यहाँ पे बहुत से ऐसे डिफरेंट, अब देखिए पाकिस्तान में और यहाँ पे जो सबसे बड़ा मैंने डिफरेंस देखा ना, यहाँ पे पाकिस्तान में अगर आप एक न्यू बेचारा ग्रेजुएट, अभी नया नया ग्रेजुएट होता है और वो जाता है मार्केट के अंदर, तो सबसे पहले तो वो कहीं पे भी अगर जॉब वैकेंसीज देखता है तो वहां पे कहते हैं 5 साल एक्सपीरियंस। तो आप खुद सोचें, एक न्यू ग्रेजुएट 5 साल एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर आएगा? ठीक है, ये बहुत ज्यादा अनफेयर है। तो यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे वो हर साल ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो कि अपने फाइनल सेमेस्टर के अंदर हैं या उनका एक ईयर रह गया है, तो उनके लिए ग्रेजुएट प्रोग्राम आते हैं, वो उसके अंदर अप्लाई करते हैं और उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह ये चीजें उन्होंने ऐड कर दी हैं। लेकिन वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने तो जीआरई दिया हुआ था, तो मेरे लिए तो मसला ही नहीं था। तो एप्टीट्यूड पाकिस्तान में भी आप एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं ना, गैट देते हैं, आई थिंक ग्रेजुएट असेसमेंट है समथिंग। तो वो आपको वो थोड़ी बहुत चीजें, तो आप क्या करते हो कि आप लैंड कर जाते हो किसी अच्छी कंपनी के अंदर। फिर उसमें ये होता है कि वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि वो 3 महीने की आपको या 1 साल की इंटर्नशिप करवाते हैं, और उसके बाद वो अगर आप बहुत अच्छा कर रहे होते हो ना, परफॉर्म करते हो, तो आपको राइट अवे जॉब दे देते हैं। तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होती, आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ता। लेकिन इन केस अगर शाज़ो नादिर पे ऐसा केस हो, आपको जॉब नहीं भी मिलती ना, तो ये होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस आ गया अब एक बहुत अच्छी कंपनी का, आप उसकी बेस पे किसी भी दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। राइट, तो ओके। आईटी जी जी। आईटी के बच्चों के लिए, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास स्किल नहीं है, लेट्स सपोज आपके पास स्किल, वैसे तो मैं कहूंगा कि आप स्किल लेकर आए, तो ये है कि आप यहाँ पे किसी बार में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी बर्गर शॉप में आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और गुजारा हो जाता है। आप बहुत इजीली पार्ट टाइम जॉब के अंदर, अगर आप सिर्फ सैटरडे संडे और फ्राइडे लाइक 3 दिन जाते हैं, तो आप अर्न कर लेते हो अराउंड आई थिंक 13,000 kroners और समथिंग। राइट, ओके, थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी एलाबोरेटेड आंसर। मतलब मुझे तो हर एक बात समझ आ गई है। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स काफी हद तक समझ गए होंगे कि क्या जो है वो डायनामिक्स हैं नॉर्वे में, अगर आपने फॉर एग्जांपल पढ़ाई करनी है। मैं अब क्वेश्चंस जो हैं वो जो मुझे अब आ रहे हैं मैं बताती जाती हूँ। हमारी एक स्टूडेंट है जैनब, 5th सेमेस्टर से हैं। वो पूछ रही हैं कि आई वांटेड टू आस्क सर दैट इज इट नेसेसरी दैट वी स्टार्टिंग डूइंग इंटर्न्स जॉब एट द मिडल ऑफ सेमेस्टर, that we can do it at the end of the semester? Which field of software engineering is in nowadays in industry? अच्छा, देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये मेरे से बहुत लोग पूछते हैं। जब मेरी सिस्टर कह रही थी ना, वो भी मुझे आगे कहती थी, उस्मान तुम इंडस्ट्री में हो, मुझे बताओ मैं क्या करूँ ना। तो मुझे नहीं समझ आती थी, अब मैं से क्या बताऊं। आप एक कंपनी में जाओगे वो रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, दूसरी पे जाओगे तो जी वो एंगुलर पे काम कर रहे हैं, सही हो गया। बात ये है कि टेक्नोलॉजी डजंट मैटर, आपको कोडिंग आनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि हर बंदा कोडर, लेकिन हर बंदा कोडर नहीं बन सकता। आप बहुत अच्छी कोडिंग कर लेंगे, आपको बहुत अच्छी कोडिंग आती भी होगी, आप एट द एंड ऑफ द डे आप इंजॉय नहीं करोगे उस चीज को। तो मैं सब स्टूडेंट्स को जो मैंने आज यहाँ पे एडवाइस देनी है, जो इस पे मैंने बहुत सोचा भी और जो मेरा एक्सपीरियंस भी है, वो ये कि यार आप देखें कि जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप देखें कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है, सही है। चौथे सेमेस्टर तक ना, आई थिंक लाइक जो 4th सेमेस्टर होता है, वहां पे आके आपको पता चल जाता है कि आप कोडिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आप कोडिंग कर सकते हो कि आप उसे एंजॉय कर रहे हो। अच्छा, जब आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, ग्रुप में काम करते हो, तो कुछ बच्चे क्यूए में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लड़के विजुअल एस्थेटिक सेंस उनकी बहुत अच्छी होती है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि जब भी आप कोई भी कोर्सेज पढ़ रहे हैं, आप देखें कि आप वो कौन सा कोर्स है जिसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करते हैं या जिसमें आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें और आप उस स्ट्रेंथ को फिर मजबूत करें। मेरा ये कहने का मकसद हरगिज नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोडिंग में बहुत अच्छा हूं तो जी मैं लाइफ एंड लिविंग या इस्लामियात जो है उसे छोड़ देता हूं, या पाकिस्तान स्टडीज को छोड़ देता हूं, या मैं क्या कहते हैं इसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को छोड़ देता हूं, या मैं ओएस को छोड़ देता हूं। नहीं, उससे आप पढ़ें, लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ है ना उससे मजबूत करें। बिकॉज इन द फ्यूचर आपने वो जो आपकी स्ट्रेंथ होगी ना, वो आपका लाइवलीहुड वो आपका अर्निंग हेड बनेगी। Right, ठीक है, right. तो अपनी Okay, स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें। okay. Let me take another question. Okay. One more question is, ये इसी आपने जो भी आंसर किया उसके साथ ही कनेक्टेड है कि मैम देर इज अ मिथ कि ओनली सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर सॉरी ओनली प्रोग्रामर्स कैन डू गुड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड. आई एम अ पर्सन हु डोंट फाइंड माई सेल्फ comfortable in any programming language except Java. So can I excel in this field?
Java is itself a coding language. I don't understand her question because अगर वो जावा में अच्छी है तो जावा की तो बहुत जॉब्स हैं मार्केट के अंदर, लेकिन वो एग्जैक्टली। जावा में कौन सी जावा में अच्छी हैं ये भी तो वो बताए ना। वो J2SC में अच्छी हैं, J2EE पे अच्छी हैं। अच्छा, अगर वो जावा में अच्छी हैं तो उन्होंने किस फ्रेमवर्क पे काम किया है? स्प्रिंग MVP के पे किया है, MVC पे किया है, किस पे किया है? तो ये थोड़ा उन्हें बताना पड़ेगा। राइट। ओके। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारी स्टूडेंट हैं लिंता बुशरा खालिक। वो क्वेश्चन पूछ रही हैं कि लेट मी गिव सेकंड, कि नहीं, ये क्वेश्चन है रिमशा शेरवानी की तरफ से। I want to ask that question one. After completing BS, it is difficult for students who do not belong to rich families to go abroad. They have to do some job to increase their experience. How can such students go abroad to study? ठीक है उस्मान, पहला क्वेश्चन ये है, आप जरा दिमाग में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है इन्हीं स्टूडेंट का कि हाउ कैन वी स्टडी एट abroad on scholarship right after completion of BS degree? As we know, today we see many advertisements and commercials of different companies giving scholarships. For example, couple of months before, Canadian University were offering scholarships, but many people thought that they are not legitimate. So, how can we come to know about different scholarships offered by different universities actually? अच्छा, अब ये होता है कि कुछ प्रोग्राम्स होते कुछ स्कॉलरशिप। अच्छा, पहला मैं जवाब दे दूं जो बहन कह रही थी कि मैं एक यानी अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से हूं और मेरे पास इतने एक्सपेंसेस नहीं है, तो उसके लिए कि आप स्कॉलरशिप, आप अगर आप पढ़ाई में अच्छी हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ना GRE करें, और GRE में आप अच्छा स्कोर लें, टॉफल करें या आइल्स करें उसके साथ, सही है। मोटिवेशन लेटर लिखें, आप फुल ब्राइट के लिए अप्लाई करें। आपको पता है पाकिस्तान में सबसे आज तक लाइक हिस्ट्री के अंदर, आप जब से फुल ब्राइट स्टार्ट हुए तब से आज तक सबसे ज्यादा पाकिस्तान से फुल ब्राइट स्कॉलर्स बनते हैं जो US जाते हैं। फुल ब्राइट का क्या फायदा है? फुल ब्राइट में आपकी यूनिवर्सिटी फी जो होते हैं वो इंक्लूडेड होती है, जो वो लोग देते हैं। इसके अलावा आपको पर मंथ स्टाइफन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कॉमन लाइक स्टाइफन की बेसिस में ही आपका रेंट वगैरह सब शामिल होता है, लेकिन आपको अलाउंस मिलता है कि आप US घूम सकें। सो आप तकरीबन 20-30 स्टेट्स तो ऐसे ही घूम लेते हैं उस स्टाइफन के अंदर, राइट। और फिर अगर फॉर एग्जांपल इवन दो आपको स्टाइफन भी मिल रहा है और आप वहां पे पढ़ भी रहे हैं और मीनवाइल आपको यूनिवर्सिटी के अंदर कोई जॉब मिल जाती है, छोटी टीचिंग असिस्टेंट मिल जाती है, समथिंग लाइक दैट, तो आप अलाउड होते हैं कि आप 20 आवर्स को वीक काम कर सकें, तो आप बहुत अच्छा अर्न कर लेते हैं। और फिर उसमें ये होता है कि जब आप फुल ब्राइट स्कॉलर बन के वापस आते हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। फुल ब्राइट स्कॉलर का सिर्फ एक नुकसान जो मुझे लगता है वो ये है कि जब आप 2 साल अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हो तो आपको रिटर्न होना होता है अपनी कंट्री, और अपनी कंट्री को सर्व करना होता है फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स और समथिंग, और उससे पहले आप कंट्री नहीं छोड़ सकते या एटलीस्ट US नहीं जा सकते। तो ये पहले क्वेश्चन का जवाब होगा कि आप फुल ब्राइट के लिए अप्लाई करें, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, बस GRE अच्छा कर लें और इंटरव्यू की अच्छी प्रिपरेशन कर लें। अच्छा, दूसरा उन्होंने सवाल पूछा कि बहुत से स्कॉलरशिप्स हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे स्कॉलरशिप है जैसे यूरोपीय यूनियन का कोई स्कॉलरशिप है, ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल का कोई स्कॉलरशिप है। तो हर स्कॉलरशिप, जैसे जर्मनी वालों का दाच स्कॉलरशिप है, तो हर स्कॉलरशिप की ना अपनी वेबसाइट्स होती हैं। सबसे पहले तो आप उस वेबसाइट पे जाएं और जाके आप देखें कि आपने वो लाइक उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें कि आपने वो स्कॉलरशिप गेट कैसे करना है, यानी कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सही है। उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। सिर्फ वो देखिए, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को स्कॉलरशिप लेके देखा है मैम, जिनके ना 2.8 CGPA था या 2.5 CGPA था, और उन बच्चों का भी रिजेक्ट होते देखा जिनका 3.3 CGPA था, ठीक है। सेम सेम साथ उन्होंने अप्लाई किया, 2.5 वाले का हो गया, 3.3 वाले का नहीं हुआ। रीजन, 2.5 वाले ने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी, डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, प्रोफाइल बनाई अपनी प्रॉपर, उसने अपनी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी की, मोटिवेशन लेटर बहुत अच्छा लिखा, और उसे स्कॉलरशिप मिल गया। सो दैट्स द थिंग। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो होती है ना, उनकी आप वेबसाइट, जैसे आप स्वीडन की जब आप जाते हो, स्वीडन की एक ही वेबसाइट है, मुझे अब याद नहीं है उसका URL, बट आप उसके ऊपर जब जाते हो, जब आप अप्लाई करते हो ना, तो उसके अंदर आप साथ ही ऑप्शन होती है कि डिफरेंट स्कॉलरशिप उसी वेबसाइट पे दिए होते हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे होते हो। तो आप वो साथ ही जब आप अप्लाई करते हो तो आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर देते हो। तो वो जैसे ही आपका साथ ही, कई दफा ऐसा होता है कि स्कॉलरशिप का आंसर पहले आ जाता है और आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आंसर बाद में आता है, और कई दफा यानी कि ये इस तरह चलता रहता है, कभी साथ भी आ जाता है लेकिन आपको मिल जाता है स्कॉलरशिप।
Right. Thank you so much, Usman, for such a very detailed answer. We have one more last question, I guess, because Yeah. वैसे बहुत लंबी लिस्ट है, but प्रोग्राम के टाइम का भी हमने ख्याल रखना है. Yeah. Question है कि what is more required after BS software engineering to do a good job or start my own business? As we see in our surrounding, many people are jobless and they can't even start their business according to this situation. This their year of study is wasted. How to overcome this situation? यार देखिए, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, लेकिन आप फ्रीलांसिंग भी अगर आप कोई भी काम करते हो ना, तो एक्चुअली हमारे यहाँ ना पेशेंस की कमी है थोड़ी सा. हम में मेरे में भी बहुत ज्यादा पेशेंस की कमी थी. हम कहते हैं कि अच्छा, मैं आज जाके फिवर पे अकाउंट बनाया है या फिर मैंने किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाया है, और कल मेरे पास जी 1 मिलियन का प्रोजेक्ट आ जाएगा और परसों मैं घर भी ले लूंगा और गाड़ी भी ले लूंगा और मैं बहुत रिच हो जाऊंगा, ब्ला 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 ब्ला. नहीं, देखिए वो आपका पेशेंस होता है ना. आपको एटलीस्ट अगर आप यूट्यूब चैनल भी बनाते हो ना, तो एटलीस्ट 1 साल आपको चाहिए उसके ऊपर लाइक ऑडियंस को गेट करने के लिए. सिमिलरली जब आप ऐसा कोई फ्रीलांसिंग अकाउंट बनाते हो, आपको बहुत एक्टिवली देखना पड़ता है किस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं एंड ब्ला 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 ब्ला. तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप देखिए कि आपके बैच के अंदर या आपके जानने वालों के अंदर या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कोई ऐसा बंदा हो जिसका बहुत अच्छा जिसे कहते हैं फ्रीलांसिंग अकाउंट चल रहा हो. आप उस बंदे के साथ कनेक्ट हो जाएं. आप उस बंदे को कि यार मैं तेरे साथ 2 महीने या 3 महीने फ्री काम करता हूँ, मुझे सिर्फ सिखा दे ये कैसे करते हैं. सिर्फ जस्ट गेट योरसेल्फ इंक्लूड इन दिस प्रोसेस. जब आप काम करने लगोगे ना, वो बंदा जो आपसे अभी फ्री में काम करवा रहा है, ठीक है, बेशक आप उसका टाइम थोड़ा वेस्ट करोगे, लेकिन 3 महीने में आप इतना सीख जाओगे कि आप उस बंदे का रिसोर्स बन जाओगे और वो आपके ऊपर और प्रोजेक्ट उठाएगा. और अब अगर आप अब उसने और प्रोजेक्ट उठा लिया, अब आपको अच्छा यार मैं तो जा रहा हूँ, मेरी तो स्किल उस दौरान आपकी स्किल भी हो जाएंगी. आप किसी और कंपनी में भी काम कर सकते हो, या अगर आपको कंपनी में काम नहीं भी मिलता, आप उसको हाँ यार मुझे फलानी कंपनी में काम मिल रहा है तो मैं तो जा रहा हूँ, आप उससे बार्गेन कर सकते हो. वो अच्छा यार मैं तुझे इतना देता तो तू ना जा, तू मेरे लिए बहुत अच्छा है, समथिंग लाइक दैट. तो एक तो ये चीज होती है कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ टच हो जाएं. और एक क्वेश्चन मैम मैं लास्ट में ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं ना कि यार मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें अगर आपके पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू है और आपकी कोई जमीनें शमीनें है और आपको बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, आपको कोई मसला नहीं है, आप 2 साल बैठे हुए हैं, किसी एक ऐप आप बना रहे हैं, तो आपको है कि 10 सालों में चल जाएगी, तो आप कर सकते हैं. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो मैं कहूँगा अपना प्लीज टाइम वेस्ट ना करें, अपने पेरेंट्स को अजियत ना दें, बहन भाई को, और अपनी जात को सबसे ज्यादा अजियत ना दें. आप लोग किसी ना किसी कंपनी के साथ काम शुरू कर दें, और जो भी आपके जहन में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, रेलिवेंट लोगों को इकट्ठा करें जो आपके साथ मिलकर वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वीकेंड्स पे करें. मैं इसी तरह कर रहा हूँ. मैं इस वक्त यहाँ पे थेलिया में काम करता हूँ, 5 दिन में थेलिया में काम करता हूँ. इसके अलावा हमारी अपनी कंपनी है जिसके ऊपर हम फ्रीलांस में काम करते हैं. मैंने कौन कौन सी कंपनीज के साथ में, हम जर्मन कंपनीज के साथ काम करें, डेनिश कंपनीज के साथ काम करें, मास्टर डेटा, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ मास्टर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम और नॉट, बट इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग. हम मास्टर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम पे एक नॉर्वेजियन कंपनी के साथ भी काम कर रहे हैं अपनी उस कंपनी में. हम एक यूएस कंपनी के साथ रिटेलर्स के ऊपर काम कर रहे हैं. तो मैं क्या कहते हैं सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन से हमारी डेनिश कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ. जर्मनी के अंदर हम एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वो लाइक ये जो बड़ी हैवी मशीनरीज होती है ना, उसकी आईटी से रिलेटेड हम लोग कुछ करें. आई रियली डू नॉट आई कैन नॉट रिवील थिंग्स, but I cannot reveal even the name of the companies for some certain reasons. But this is what I'm doing. I also want to pursue a business. I also want to have my own company someday, but I just cannot leave my current job. I'm still surviving over here and working over there as well. Wonderful, wonderful. Thank you so much, Usman. Still, Yes. I have a long list of questions, but honestly, program का time बहुत थोड़ा रह गया. Yeah, तो yeah. एंड में अगर वाइंड अप करते हुए मैं आपसे ये कहूँ कि उस्मान, आप खुद एक एग्जाम्पल हैं बीइंग अ स्टूडेंट. अगर मैं एक टीचर होने के हवाले से बात करूँ, तो बस एंड में अगर आप बिल्कुल कुछ थोड़े से टिप्स 1 2 3 4 कुछ करके बता सकें कि क्या आपके मुताबिक, क्योंकि हर बंदे के मुताबिक कामयाब होने के कुछ अलग पैरामीटर्स हैं, आपने अपना जो पूरा जर्नी था माशाल्लाह सक्सेस का, अगर उसको आप समराइज करें 1 2 3 4 5, तो क्या वो 5 टिप्स हैं जो आप एक अंडर ग्रेड स्टूडेंट को देंगे कि जब वो डिग्री कंप्लीट करे तो वो किस तरह करे और कैसे लाइफ में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता है वो?
मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले आप सबसे पहले नमाज़ पढ़ें। मैंने जो कुछ हासिल किया है वो अल्लाह ताला इसके दुआएं करके किया है। मेरी मामा हर वक्त जो है वो जाए नमाज पे बैठी होती थी, पापा को भी जाए नमाज पे बिठाया होता था कि आज मेरी प्रेजेंटेशन है। मैं तो छोटे छोटे सेमेस्टर प्रोजेक्ट होते थे तो घर वालों को टेंशन दी होती थी, ये प्रोजेक्ट के लिए आप दुआएं करें। तो एक तो अल्लाह ताला से दुआ करें, पहली चीज मैं बताऊंगा। दूसरा है कि अपने पेरेंट्स का कभी दिल ना दुखाएं और अपने पेरेंट्स से दुआएं लें, उनके साथ अपनी चीजें डिस्कस करें। दैट्स अ जनरल थिंग। उसके बाद अब मैं टेक्निकल जो असल चीजें उनकी तरफ आ जाता हूँ। सीरियस हो जाएं अपने काम के साथ। अगर आपको नहीं भी समझ आती ना, अगर आपको एक चीज नहीं समझ आ रही, एक बंदा पकड़ लें, चाहे वो बंदा आपसे तप जाए, वो बंदा कि यार ये क्या यार मेरा, वो आपको धुतकारे भी ना, आप उसे पकड़ लें, उससे काम आता है ना, आप उससे काम सीखें। मैंने तो यही किया है। मैं तो अपने टीचर्स के भी कान खाता था, अपने दोस्तों के भी कान खाता था, जिन्हें भी मैं जानता था। तो ये चीज है। और फोकस हो जाएं, ये चीजें भी छोड़ दें। ये जो पता है मैं आपको बताऊं, बहुत से लड़के और लड़कियां जो हैं वो पता नहीं रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं। मैं भी था एक रिलेशनशिप में, लेकिन मैंने कभी भी उसे अपने सर पे सवार ही नहीं किया। तो आप ये है कि अपनी क्या कहते हैं इससे फोकस्ड रहें, रेलिवेंट रहें। बस ये मैम मेरी तरफ से जो है वो सजेशन था। थैंक या थैंक यू सो मच उस्मान। या ऑनेस्टली ये कोई रस्मन जुमला नहीं है कि आई एम फीलिंग माई सेल्फ सो प्राउड टू हैव माई ओन स्टूडेंट एज माई गेस्ट of my program, and thank you so much on the behalf of my all viewers, on the behalf of my all students, on the behalf of my all YouTube viewers, कि आपने इतना सारा टाइम, मुझे अंदाज़ा है प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी की भलाई के लिए, कि किसी को कुछ सीखने का मौका मिले, आप इतना टाइम स्पेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। और यूट्यूब फैमिली, आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ बने रहे, आपने ये प्रोग्राम पूरा देखा, और मुझे उम्मीद है कि जो मकसद था इसका, वो उसको हक अदा करने में हम कहीं ना कहीं कामयाब हुए होंगे। तो जो आज का टैज़ टॉक्स का जो एपिसोड 2 है, वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू सो मच। आई जस्ट वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। एक्चुअली पता है क्या, मैंने एक पूरा प्रोसेस लिखा हुआ था कि हाउ टू अप्लाई इन नॉर्वे। वो ना बातों बातों में रह गया, बिकॉज हम बहुत ज्यादा डाइवर्स बातें कर रहे थे। तो मे बी मैम अगर आपके पास आगे टाइम हुआ एंड यू वुड लाइक, तो हम एक पूरा सेशन कर लेंगे जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को ये बताएंगे कि अगर आपने नॉर्वे में आना है तो आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस, लाइक आप अपनी एप्लीकेशन किस तरह बनाएंगे और किस तरह से आप अपलोड करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो वो लाइक आई थिंक हार्डली 25 मिनट्स का एक सेशन हो जाएगा। सो यू जस्ट लेट मी नो, आई विल प्रिपेयर थिंग्स फॉर यू एंड वी कैन सिट एंड वी कैन रिकॉर्ड समथिंग। वंडरफुल, मेरी तरफ से तो यस है। एंड मैं Great. अपने गेस्ट के बिहाफ पे अपने यूट्यूब व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगी कि कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या इस तरह का सेशन हम करें उस्मान हाशिम के साथ, कि जिसमें वो स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में गाइड करें। और डेफिनेटली थैंक यू सो मच उस्मान कि आप एक बार फिर नेक्स्ट अपने गाइडेंस के लिए आप जो है पहले से ही अपनी जो है ना कि कमिटमेंट शो कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा वंस अगेन। एंड प्रोग्राम को भी यहाँ पे फॉर्मली वाइंड अप करते हैं। YouTube family, thank you so much for watching the program. इंशाल्लाह टैज़ टॉक्स के अगले एपिसोड में हम किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए एक्सपर्ट के साथ, किसी नई टॉपिक के साथ हम इंशाल्लाह ताला आएंगे। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। थैंक यू सो मच। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। Thank you. Bye bye. अल्लाह हाफिज।